What's important about the current outlook is that it is weak, but it is weak in a phase where the global economy has been hit by shocks repeatedly of orders of magnitude that we've rarely seen in the past. And these shocks in quick succession have put us in a situation where earlier in this year, uncertainty was at its highest. It's been in a very long time. Things were very unclear, but now things are started to fall into place and they've started to make some more sense. So not all of that is good, but at least it's becoming a little bit clearer, and companies and countries are adjusting to this new reality. When we asked the chief economists about which area of the global economy were disrupted, they basically said all of them. And they said that the level of disruption was moderate to high for almost all of the areas that we asked them about. So the picture is one of a global economy that is transforming, and it is transforming profoundly. So the regional picture is very diverse, and what we see is a very cautious outlook for the United States on the one hand, and a very optimistic one for the Middle East and North Africa on the other. We fully don't understand yet what the technology is going to do to the global economy. Productivity impacts are, for now, seen to be relatively low, but it's a question of time. We're moving away from the traditional system that everybody's gotten used to, and what the new system is going to be like, we don't know yet. That's exciting because it creates opportunities. It's also a bit challenging because it forces everybody to change their mindsets and to adapt to new realities. For advanced economies, the story is very much about technology, skills and talent. So technology, innovation, and ecosystem development in particular is the strongest growth driver, whereas for developing economies, this is much more about human capital development. So these diverging paths that are shaping up are something to watch in the next couple of years as countries adapt to the new global economy.2线的，因为他手工我就算直接因为我在孩子出生以后，为了更好的照顾家庭，所以有很长的时间都没有上班。后来听说海尔的货币智能有一个专门针对宝妈班的一个班子。以往呢，这个爱宾是在编写作业指导书的时候呢，可能更加倾向于质量，还有这个生产效率方面。那往往呢，就是在编制作业指导书的时候，对于这个一线操作工人他们的作业习惯，还有这个作业复刻度呢，关注度比较低。那正是因为这样呢，可能会导致这个不同岗位的工人他们的作业分配的不均衡，会产生的员工抱怨。
这个在做 AI 工程师的时候呢，其实这个工作任务呢还是比较繁重的。那尤其是我们这个合肥领知呢，这个创新使用了宝妈般的灵活用工模式。第一个痛点呢，就是制作这个生产作业指导书的这个量呢变得很大。因为这个宝妈们灵活的出勤时间呢，就导致了这个产线作业人数的变化。那这样呢，就是需要我们去更加灵活的去分配作业任务。同时，我的工作、生活都得到了保障。其实那个数字化转型的意义呢，可能是不仅仅在于它是对于帮助企业适应这个科技革命，还有这个适应产业变革，更重要的呢是它也帮助了企业提升了它的这个竞争力和创新能力。गर्मी तेज हो जाती है, नहीं बर्दाश्त होता है, तो किसी दिन हम आधी दिहाड़ी करते हैं, मतलब 1 बजे तक काम करते हैं, उसके बाद में रूम पे चले जाते हैं। किसी दिन ठंडा मौसम रहता है तो 1.5 झाड़ी लगा के उसको कवर कर लेते हैं। और जैसे नहीं जाएंगे सुबह से ही काम करने के लिए तो वो झाड़ी कटेगा हमारा। फायदा तो बहुत होगा बीमा के पैसे से, जैसे घर गृहस्थी है वो किसी चीज़ के लिए तंग ना रहेगी, दवाई दूरी के लिए। धूप की वजह से काम नहीं कर पाते हैं और हमको छांव चाहिए, गर्मी में चक्कर आ जाते हैं, फिर हमको तबीयत भी खराब हो जाता है। फिर जमीन डूब गया, कुछ काम नहीं था ना,
इसी चक्कर में हम लोग दिल्ली आए, 5 साल हो गए इसी चक्कर से। तो इधर काम कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। कभी जैसे हम लोग बिहार से आते हैं तो उधर ना बाढ़ होती रहती है, साल में हर साल बाढ़ होते हैं। तो एक साल ऐसा आया कि हम लोग का सारा खेती बाड़ी डूब गया, तो कुछ काम नहीं मिलता है। जितना हम काम करते हैं उतने ही टाइम का पैसा देते हैं और वो भी टाइम पे नहीं मिलता है। तो पैसे के लिए मैनेजमेंट करना पड़ता है, गांव में भी घर बार देखना पड़ता है। प्रदूषण होता है, ये बंद हो जाता है तो 2000 से लेकर 3000 तक लमसम कभी कभी वो भी नहीं हो पाता है। और जब काम चलते हैं 8000 10,000 रुपये तक महीने का, 10-12 मतलब लमसम 12,000 रुपये पड़ जाते हैं। जब प्रदूषण लगता है सर मतलब दिक्कतें ये आती हैं। पहले बच्चे की पढ़ाई हो गई, ट्यूशन की भी स्कूल की भी, उसके बाद जो फिर राशन पानी वो भी ज़रूरी है, तो एक बजे किराए के पैसे भी रुक जाते हैं। इस कारण मुझे ये प्रदूषण में ज़्यादा परेशानी आती है। नहीं और टाइम तो जनसाहस ने हमें 2 महीने पैसे दिए थे, तब हमने उनसे राशन लेके आए थे ना, तो राशन लेके आए तो 1 महीने सही से चला। जनसाहस वाले जो आए थे उनसे मेरी बहुत मदद हुई है। पहले जनवरी में पहली किस्त आई थी, मैं पहली किस्त में मेरा राशन भरवाया था। उसके बाद जो है दूसरी किस्त फरवरी में आई थी मेरी। फरवरी आने के बाद जो है मैंने 1000 रुपये बच्चों को दिए थे, तो बच्चों ने कहना लड़की की फीस नहीं है, इसलिए मैंने उनको फीस में दे दिए। 250 रुपये मेरे भी अकाउंट में पड़े हुए हैं।